हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 जनवरी 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चेन्नई के द्वारा CBT 1 प्रतियोगिता परीक्षाएं जो ली गई थी उसके रिजल्ट जारी कर दी गई है। तो इस प्रकार से सूचना है। पहला, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 28 December 2020 to 31st July 2021 by Railway Recruitment Boards for the post of NTPC against CEN 01/2019। फिर आगे है, द कैंडिडेट्स bearing the roll numbers listed herein under have been provisionally shortlisted to appear in the second stage CBT। फिर तीसरा पॉइंट है, द कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड एज पर द मेरिट इन फर्स्ट स्टेज CBT ड्यूली कंसिडरिंग देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट। फिर आगे है, कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज CBT availing the reservation benefits of OBC, SC, ST, EWS, PWBD and ex-servicemen shall continue to be considered only against OBC, NCL, SC, ST, EWS, PWBD and ex-servicemen for all subsequent stages of recruitment process। फिर आगे है, subsequent shortlisting for document verification will be based on the performance of candidates in second stage CBT and based on the performance of candidates in both second stage CBT and CBAT/TST as applicable। फिर आगे है, separate second stage CBT are conducted for each of the 7 CPC level notified in CN number 01/2019, that is level 2, 3, 4, 5 and 6। All posts falling within same level of 7 CPC will have a common second stage CBT। फिर आगे है, second stage CBT for the post under each level for the provisionally qualified candidates tentatively scheduled from 14 February 2022 till 18 February 2022। तो इस पर सभी अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है जिन्होंने CBT 1 क्लियर कर लिया हो, कि CBT 2 जो है 14 फरवरी 2022 से लेकर 18 फरवरी 2022 के बीच आयोजित की जाएगी। All these candidates shall be advised through official website of RRB, SMS, email to download their exam city intimation about 10 days prior to the second stage CBT। The e-call letter will be available for download 4 days prior to CBT date। फिर आगे है, candidates can view their individual scores and their qualifying status for second stage CBT by logging in through the link provided on the official website of RRB, duly entering their registration number and date of birth, or on login. Candidates can also see their question paper in which he/she has appeared along with their correct answer marked along the 4 options। The candidature of all the qualified candidates for second CBT purely provisional and is liable to be cancelled at any stage of recruitment, or therefore in case of any inconsistency, a deficiency in the data furnished, or any malpractice on part of candidates coming to the notice of RRB, it may be noted that merely calling a candidates for second stage CBT does not entitle him/her in any way to an appointment in the railways। फिर आगे है,
While every care has been taken in preparing the list of candidates qualified for second stage CBT, RRB reserves the right to rectify any inadvertent error or typographical printing mistakes. RRB regrets inability to entertain any correspondence from unsuccessful candidates. Here the candidates are advised to regularly visit RRB official website for the updates. The roll numbers of the provisionally qualified candidates for second stage CBT are arranged horizontally in ascending order and not in order of merit. Important notice है, beware of the touts who may misguide the candidates with false promises of getting them selected for the job on illegal consideration. The recruitment process in the RRB exams is fully computerized and the selection is based on merit of candidates only. Please visit the official website of RRB for regular updates and information. इस प्रकार से आरबी चेन्नई द्वारा जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं CBT 2 के लिए उनका रोल नंबर दे दिया गया है। इसलिए जो अभ्यर्थी चेन्नई बोर्ड से एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं वे लोग यहाँ पे रोल नंबर अपना चेक कर सकते हैं। तो शीघ्र ही अन्य बोर्ड द्वारा भी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। इसीलिए जो भी एसडीएनसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे लोग वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और उम्मीद है कि कुछ ही देर में सब बोर्ड की रिजल्ट आ जाएगी। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।